Assalamualaikum dear students. How are you all? Hope so you all are fine. It's math grade 1 lecture number 10. I am your math teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bhilwal. So, grade 1. Anyone can guess what is our work today? आज हमने क्या करना है? हमने आज करनी है addition. What is our topic today? Addition. एडिशन के लिए आप साइन कौन सा यूज करते हैं, पहले मुझे ये बताएं. जी, वेरी गुड. दिस इज एडिशन साइन और दिस इज एडिशन साइन और दिस इज एडिशन साइन. बताएं मुझे कौन सा है. दिस इज एडिशन साइन. वेरी गुड. एडिशन हमने करनी है यूजिंग नंबर लाइन. नंबर लाइन का तो आप सबको पता है ना, ग्रेड 1. You have used number line in your KG class for addition and subtraction. तो मैं यहाँ पे आपको number line बना के दिखा दूँ. You will use this number line in addition and subtraction. So यहाँ पे मैं कोई भी question, any of your choice, मैं यहाँ पे कोई value write कर देती हूँ. 5 plus 3 equals to. आपको कैसे पता चलेगा 5 plus 3 का आंसर क्या आता है? जी, तो नंबर लाइन को आप कैसे यूज करते हैं? द फर्स्ट वर्ड यहाँ पे आपने स्टैंड लेना है. वेयर इज 5? वेयर इज 5? हियर इज 5. 5 पे आप स्टैंड लेंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएं. 5 एंड हाउ मेनी नंबर्स विल जंप नेक्स्ट? 3. 1 2 3. व्हिच नंबर इज हियर? 8. So 5 plus 3 equals to 8. 5 plus 3 equals to 8. So this is how you use number line in adding the question, adding different values. So here is number line. No, grade 1. हमने पहले यहाँ से करना है, आपने ऊपर से तो किया ही नहीं है. So okay dear students, let's start the work. Question number 1 he has done for you. We will start from second question B. Dash plus 10 equal to 10. यहाँ पे आपको माइंड से सॉल्व करना है. मैंने आपको बताया था कि 10 कोई भी नंबर जिसमें हम वो ऐड करेंगे तो वो सेम एज इट रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा. उस दैट नंबर 0. 0 मींस नथिंग. 0 की कोई वैल्यू नहीं होती. अगर मैं यहाँ पे 2 राइट करूँ, 2 plus 10 12 हो जाएंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा? Wrong. If we write 1 here, 1 plus 10 कितने होते हैं? 11. हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 10. तो हमारा 10 तो नहीं बनेगा ना. So what we will write here, हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 0. 0 means nothing. 0 की तो वैल्यू नहीं होती. So very good. C में देखें, 2 plus 8. Where is 2? Here is 2. यहाँ पे आप स्टैंड करेंगे. 2 पे आपने स्टैंड लेना है. Here is 2. Okay. How many numbers you jump more? 8. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Which number is here? कौन सा नंबर है यहाँ पे? Very good. Here is 10. So what is our answer? 10 is our answer. Okay students, so the remaining 3 questions is their homework. Now look at the question G. 9 plus 1. अब यहाँ पे आपने क्या करना है? हर नंबर के सामने आपने उतनी ही लाइंस ड्रॉ करनी है. You will draw 9 lines in front of 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. And this is 1. 9 plus 1 makes 10. 9 plus 1 makes 10. This is 6. How many lines you will draw? You will draw 6 lines here and 4 lines here. So these 6 and these 4 make 10. You have to make 10 in each answer. So these questions as well as these questions is your homework task. You have to complete it on your book. So dear students, now open your notebook
वेरी गुड। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप लोग करते हैं डेली बेसिस पे, मेंटेन करते हैं डे डेट, टिक करते हैं होमवर्क पे। टॉपिक वी आर रिवाइजिंग द वर्ड काउंटिंग फ्रॉम प्रीवियस 2 लेक्चर्स। तो हमने यहाँ पे आज का टॉपिक क्या है हमारा, वर्ड्स काउंटिंग राइट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था राइट करी थी जी एनीवन एंड स्टूडेंट, यस 12 तक। सो आज हमने कहां से स्टार्ट लेना है, we'll start from 13। 11 के स्पेलिंग क्या थे, E-L-E-V-E and 11। उसके बाद आपने किससे किया था 12, T-W-E-L-V-E 12। 11, 12 आज हमने क्या करना है, we'll start from 13। 13 के स्पेलिंग क्या है, ग्रेड 1 T, राइट करें मेरे साथ साथ, T-H-I-R third, T-H-I-R third, T-E-E-N 13। 13 के सामने आप राइट करेंगे 13 के बाद क्या आता है, which number comes after 13? Yes, here is 14, F-O-U-R 4, T-E-E-N 14। So which number comes after 14? Yes, here is 15, F-I-F-T-E-E-N 15। 15 के सामने आप क्या राइट करेंगे, 50, 13, 14, 15। So this is their homework. You will practice these 3 on the remaining page। आप इसको बाकी के पेज पे भी प्रैक्टिस करेंगे। So this is your all about today's work। आपने नंबर 9 को यूज करके आपने एडिशन की, उसके अलावा आपने वर्ड्स काउंटिंग डिवाइस किया है। So make sure the practice at your home, the more practice, more you will learn। So grade 1, see you tomorrow inshallah। Allah Hafiz।